Good morning, online students. Chalo, let's start now. Good morning. Good morning. Good morning, online students. Chalo, let's start now. Governance class today. Governance. So around 4 classes I'll take. और 4 class में in 4 classes what I will do, I will cover topics like civil. ये क्या? ये कौन सा background है? Black नहीं? White? तुम्हारे लिए. Now, okay. वैसे भी I will use my iPad now. और ये क्या है देखो, तो आई विल डू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस. सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आई विल कवर टॉपिक्स लाइक एनजीओस, देन एसएचजीस, कोऑपरेटिव्स. एनजीओ, एसएचजीस, कोऑपरेटिव्स, ये मैं कवर करूंगा आपके साथ. एंड ऑल्सो एफपीओस, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओस. ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा क्योंकि वैसे ये एग्रीकल्चर का पार्ट है. नेक्स्ट सीएसओस के बाद आई विल स्टार्ट विथ एजुकेशन सेक्टर, एंड देन आई विल कवर हेल्थ सेक्टर. सो दिस इज माय पार्ट. बाकी गवर्नेंस somebody else will do. So now we will first see. अच्छा, इसी के अंदर आती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, ये वाली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशर ग्रुप्स. तो ये इनमें कुछ पढ़ाने का नहीं होता है, सिंपल होते हैं ये टॉपिक्स. आई विल गिव यू द ब्रीफ हेडिंग, प्रेशर ग्रुप्स एंड ऑल. तो ये अपन फॉलो करेंगे फॉर द नेक्स्ट 4 classes. Now, so let's start with what is a CSO. I will start with CSOs. Now, अब देखिए, किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस में there are 3 actors in any development process. There are 3 actors. अब 3 एक्टर्स कौन हैं इसमें? The first one is the market. The first one is the state. Then we have market, state, market, और तीसरा भी बताता हूँ. Now, state was a complete socialist state. ये पूरी तरीके से एक socialist state. India was a socialist state completely from 1947 till 1991. 47 से 1991 तक India was a socialist state. Socialist state means everything is under the control of whom? State. Everything is under the control of state, and state will state will run modes of production. मतलब जैसे इसको कैसे समझो, मतलब everything is under the control of state, and state will ensure that goods and services are distributed equally among all sections of society. Okay. Now, in 1991, post 1991, we opened up the market through LPG reforms, liberalization, privatization, and globalization. So LPG reforms were introduced. Now, LPG reforms का मतलब कि market will play an important role. Now, market means only one language, that is profit. Market will work. Market capitalism पे based है ना. Capitalism सिर्फ एक ही language समझता है. What is that language? Profit. Market तभी तक है जब तक वहां पे क्या आ रहा है?
प्रॉफिट आ रहा है. सो मार्केट टेक्स केयर ऑफ रिच. ये मार्केट की खूबी है. मार्केट डजंट टेक केयर ऑफ पुअर, मार्केट टेक्स केयर ऑफ रिच. नाउ मार्केट टेकिंग केयर ऑफ रिच means who will take care of the poor? The state. The state now has responsibility of working for the poor. तो state करता क्या है? देखिए state करता क्या है? State will collect taxes from the rich and distribute it to the poor. How will it distribute? By running multiple welfare schemes. अब देखिए स्टेट की खूबी क्या है? स्टेट को इनइक्वालिटीज कम करनी है, बिकॉज मार्केट के आने से inequalities will increase. When market will come, inequalities will increase. Rich will become richer, poor will become poorer. Now to reduce inequality, state will introduce taxes, will put taxes. किस पे tax लगाएगी? Rich, and distribute money among poor sections of society. तो ये by running welfare schemes. अब इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं वेलफेयर स्कीम्स में. There are two concepts. अब एक तो welfare schemes and also provide services. Now welfare schemes are specifically for the vulnerable section. Vulnerable section जैसे women, child, elderly, ये हो गए गरीब, especially poor are vulnerable section. इनके लिए welfare schemes. Services is required by all citizens. ये सबको चाहिए. Services are required by all sections of society. जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये तो सबको चाहिए, whether rich or poor, it doesn't matter, it is required by all. So this is what is your role of state. Now when the state is running welfare schemes for the vulnerable section, the state is leaving some gaps. The state is not able to reach everyone. सब तक state नहीं पहुंच पाती किसी भी reason से. Anything may be the reason. The state is not able to cater to everyone needs. So therefore, state is leaving what? Some gaps. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, state is not able to reach the last mile. So state may be reaching 70% of the vulnerable section, but still the state is not able to cater to whom? 30%. अब इस 30% को cater करने के लिए we have the third section, which is your civil society organization, CSOs. This is also known as the third sector. Now CSO is a collective term. अच्छा, CSO काम क्या कर रहा है? CSO is filling the gaps. ये वर्ड याद रखना है, बार बार यूज होगा. Filling the gaps. CSOs fill the gaps. So it is a collective term for umbrella term or an umbrella term for variety of organizations. So CSO एक umbrella term है for variety of organizations. Now what is included in CSOs? देखिए, for example, CSO includes NGOs, SHGs, cooperatives, NGOs, SHGs, cooperatives. Then your pressure groups. Pressure groups में जैसे कौन कौन आएगा? ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, ये सारे प्रेशर ग्रुप्स का पार्ट हैं. नाउ इसके बाद देखिए और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है इसमें. कोऑपरेटिव्स के साथ स्लैश करके एफपीओस भी लिख सकते हैं अपन. एफपीओस, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन. नाउ सीएसओस में ऑल्सो इंक्लूड चैरिटी वाला तो चलो चैरिटी हो गया, और स्पोर्ट्स एसोसिएशंस.
स्पोर्ट्स एसोसिएशन जैसे बीसीसीआई स्पोर्ट एसोसिएशन, या फिर प्रोफेशनल एसोसिएशंस, प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, देन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी एसोसिएशन. So, and last, it may also include social entrepreneurs. Who are social entrepreneurs? Entrepreneurs who solve a social problem. So, for there may be entrepreneurs who may make a device, who may create robots to solve the problem of manual scavenging. है ना? तो वो किसका काम कर रहे हैं? They are socially innovating. They are going for innovations to solve social problems. Are you getting or not? तो इनको क्या बोलेंगे? Social entrepreneurs. जैसे मान लो मैंने कोई कंपनी खोली which can make tablets only for 2,000 rupees. Can it solve the problem of digital divide across the country or not? Yes. तो ये सारी चीज. तो इनका collective term is called is what is CSOs. Now, though they are different, though each of them have a different nature, they have some common characteristics. They have some common characteristics. क्या है इनमें common? Three things are very common in them. They have, they are voluntary in nature. They are voluntary organizations. मतलब people form them on their own will. ऐसा नहीं है कि somebody is forcing them to form this association. They form, it is a voluntary association. ये लिख लो word, voluntary association. Why people are forming voluntary association? Because they have common problems and common goals. सबकी प्रॉब्लम एक है, सबको कोई गोल अचीव करना है. दैट इज वाई दे आर कमिंग टुगेदर कि लेट्स डू इट टुगेदर. So this is one voluntary association of people. दूसरा, they don't work for profit. They will never work. The motive will never be to generate profit, because if they are generating profit, they will be treated as part of market, है ना? Market. Then they will start catering to whom? Rich. But हमने देखा they are mainly for the vulnerable section. Now, and they are independent of state. They are not included in state. They may be registered with the state, they may be regulated by the state, but they are not formed by the state. They don't work under any ministry, any department. They are not attachments of the ministry or any government. No, they are completely independent of state, because they are formed voluntarily by whom? Citizens. And why people are coming together? They have common problems and common goals. Now, when they come together, they create what is known as social capital. ये क्या create करते हैं? Social capital. What is social capital? अरे, what is social capital? Yes, collective strength is nothing but social capital. Collective strength. ये होता है social capital. एक और एक 11. So they can solve problem easily if they come together, united. Strength. Unity is strength. Now, when they come together, are they empowering themselves or they are dependent on somebody else? Empowering themselves. So social capital empowers people.
or empowerment always leads to long term solutions. So instead of short term solutions, the empowerment offers long term solutions to the people. Are you able to understand now? So these are the three characteristic features of whom? CSOs. अब इसको हम देखेंगे इन दोनों पॉइंट्स को, ये कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल वी विल टॉक अबाउट कोऑपरेटिव्स, वी विल टॉक अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लोगों ने कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया by forming cooperative, by forming SHGs, self-help groups. So this is what is happening here. Now, every democratic society, likho, every democratic society favors growth and development of किसका growth and development? CSOs. So any democratic society will always promote growth and development of CSO. Does it happen in India also or not? Yes. How? Under Article 19, Clause 1, Subclause C, right to form association is a fundamental right. Likho, right to form association, and now cooperatives also. Association and cooperative is a fundamental right. Got it clear? Next, now, so what are CSOs doing? What is the main task of CSOs? Jaldi se batao. They are filling the gaps left by whom? State. तो मतलब स्टेट कहीं पे लैग कर रहा है और उसको फिल करती है CSOs. Now what happened was, that means, can I say that state and CSOs should partner with each other in the development process of the country or not? Yes. अगर development inclusive बनाना है तो both should come together. So what happened was, लिखो, in 2007, government issued national policy on cooperatives. Not cooperatives, sorry, voluntary organization. Cut cooperative, right? Voluntary organization. Acha, CSOs are also called as voluntary organization. इनका दूसरा नाम CSOs, VO. Basically, it is a national policy on CSOs. Next, लिखिए अब इस policy में क्या कहा? First point. Now, who is writing this policy? The state is writing the. देखो यहाँ पे ये तीन actors को ध्यान में रखते हुए चलना है. The state is writing this policy. So what state is saying in the first point? लिखो CSOs, state and CSOs are partners in development process. And CSOs are partners in development process. So underline the word partners. ये key word है, partners. Now state is accepting the fact that it is leaving some gaps and therefore it needs the help and support of CSOs. जैसे midday meal. The state is running this program called midday meal. Now midday meal में state हो सकता है बच्चों को खाना दे, but naxal affected areas में बच्चों को खाना ना मिल पाए. So अगर बच्चों को खाना naxal affected areas में नहीं मिल रहा है, that means the state is leaving some gaps. Who can provide midday meal? CSOs. NGOs can give. So they are partners in the development. Next. अब जब मैंने बोला है कि जब state ने कहा है कि CSOs partner हैं, तो what state has to do? State has to create enabling environment
enabling environment for CSOs. State has to create enabling environment for CSOs. What do you mean by the word enabling environment? Now, CSOs must be allowed to mobilize what? Mobilize funds or resources. But if midday meal has to be given in Naxal affected areas, you need what? Funds. So they should be allowed to mobilize funds. Now, why do CSOs need to mobilize funds? They are non-profit. They are not generating any profit. हाँ, डे टू डे एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे भाई? खर्चा तो कंपनी तब निकालेगी ना जब उसके पास प्रॉफिट है. जब प्रॉफिट ही नहीं है तो खर्चे के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है. सो दे नीड टू व्हाट? मोबिलाइज फंड्स फॉर देयर एक्टिविटीज. सो दे शुड बी अलाउड टू मोबिलाइज फंड्स. जैसे वन वे ऑफ मोबिलाइजिंग फंड इज कहाँ से? डोनेशंस. यस. Foreign foreign funding can also be one of the methods or not. Yes. तो ये सब इनको allow करना चाहिए. इसमें state को too much interference should not be there. Then state should also provide resources. State should also provide funds to CSOs. ये भी देना जरूरी है funds. क्योंकि why? They are filling the gaps. जो काम स्टेट का है वो ये कर रहे हैं. तो स्टेट का काम कर रहे हैं तो स्टेट को क्या देने चाहिए इनको? फंड्स, रिसोर्सेस. लिखो बिकॉज CSOs fill the gaps. And last, state should not over regulate. State should not over-regulate CSOs. State should not over-regulate CSOs. Regulate करें पर क्या ना करें? Over-regulate. I will explain what is over-regulation. Then you write third point. So first point was about acceptance of the fact that we are partners. Now once we are partners, we will create enabling environment for our partner. And the third thing we can say is, देखो, state must regulate CSOs. State must regulate CSOs. ये जरूरी है regulate करना, but क्या नहीं करना चाहिए? Over regulate. So state must regulate CSOs in order to ensure that CSOs work in a transparent and accountable manner. CSOs work in transparent and accountable manner. Next, fourth, state must enter into strategic partnership. State must enter into strategic partnership with CSO. Underline this word, strategic partnership. पार्टनर होना अलग बात है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होना अलग बात है. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मींस, इसका मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जैसे इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का मतलब इंडिया के पास ज्योग्राफिकल लोकेशन है, यूएस के पास टेक्नोलॉजी है, तो दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो दोनों आपस में एक दूसरे की स्ट्रेटजीज एक्सचेंज कर सकते हैं. यूएस कैन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी व्हाइल इंडिया कैन प्रोवाइड एक्सेस टू ज्योग्राफिकल लोकेशन. हो सकता है या नहीं? यस. तो दिस इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. तो मतलब स्टेट के पास ऐसा क्या नहीं है जो सीएसओस के पास है. एंड व्हाई स्टेट नीड्स टू एंटर इनटू स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद सीएसओस. व्हाई लिखो. यस, सीएसओस हैव ग्राउंड नॉलेज. दे हैव ग्राउंड नॉलेज. दैट इज द कीवर्ड. About local resources. किसके बारे में नॉलेज है? Local resources and local constraints. This is very important. So since they have ground knowledge about local resources and local constraints, they can infuse efficiency in use of. किसमें efficiency चाहिए? Use of resources. Infuse efficiency in use of resources. Now this is the keyword, efficiency. Efficiency का मतलब कम रिसोर्स में ज्यादा काम. How to make the best and the efficient utilization of resources is efficiency, and this can only be done by whom? CSOs, because they have ground knowledge of local resources and local constraints. Now state also needs this efficiency or not, क्योंकि state के पास funds तो हैं, but very limited funds. Best use of their limited funds can be done with the help of whom? CSOs. So therefore they should enter into strategic collaboration. और इसी में अपन एक और चीज efficiency के साथ CSOs can innovate. इसको expand कर लो. Can innovate to work with few resources. Again, what is the reason they can innovate? Ground knowledge of local resources and local constraints. Okay, all of you, this is what we are trying to say here. तो अब ये CSOs के बारे में समझ में आया. तो what are CSOs?
नहीं, voluntary organization नहीं. What is CSO? Umbrella term for all these kind of organizations. This CSO has how many features? 3 features. They are voluntary, they are non-profit, and they are non-state, not part of the state. Clear all of you? जब ये तीनों conditions satisfy जाती हैं तो एक association कैसी बन जाती है? CSO. Now CSO के different types here है, different types of CSOs, and the main important task of CSOs is they fill the gaps left by whom? State. चलो, अब हम इसमें first CSO करेंगे अब अपना NGOs. I will explain that because they are using funds of the state. I will explain you. Don't worry. अभी तो हमने स्टार्ट किया है. अभी एग्जांपल नहीं दिया क्योंकि एग्जांपल एसएचजी, कोऑपरेटिव, एनजीओस, इनमें एग्जांपल ही एग्जांपल है ना. तो एनजीओस लिखिए. एनजीओस का नेचर कैसा है? लिखो एनजीओस दे आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. वॉलंटरी, बस इतना लिखो. वॉलंटरी एसोसिएशन कॉमा कॉमा नॉन स्टेट नॉन प्रॉफिट. नॉन स्टेट नॉन प्रॉफिट. Am I going too fast? And work for welfare of others. And they work for welfare of others. दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं कौन? एनजीओस. They don't work for their own welfare. Most of the CSOs usually work for their own welfare. जैसे एसएचजी अपने लिए काम करेगी, कोऑपरेटिव्स अपने मेंबर्स के लिए काम करेगी, प्रेशर ग्रुप्स अपने लिए नेगोशिएट करेगी. बट एनजीओ की खूबी क्या है? They work for welfare of whom? Others. Next now. Then they are formal organizations. NGOs are formal organization. Underline the word formal. Formal means they are registered with the state. They are registered with the state. It is compulsory for NGO to register with the state. NGO तभी है जब वो state के साथ क्या है? Registered. Now they can be registered either as either as society, either as trust, or either as charitable company. Now society under Indian Societies Act 1860, Indian Trust Act 1881, Indian Trust Act 1882. ये सब याद नहीं करना है ना आपको, बस ये याद रखना है. They can be registered as what? Society, trust, or as charitable company under Companies Act 2013. गेटिंग और नॉट? तो ये रजिस्ट्रेशन जरूरी है, चॉइस है आपके पास, आप अपने आप को कैसे भी रजिस्टर कर सकते हैं. क्लियर? यूजुअली जो प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन, स्पोर्ट्स बॉडीज, वो अपने आप को कैसे रजिस्टर करती हैं? सोसाइटी. जो जिन एनजीओस के पास इमूवेबल एसेट होता है, फॉर एग्जांपल ह्यूज पीस ऑफ लैंड, बिल्डिंग्स, कोई मान लो हॉस्पिटल बिल्डिंग है, ह्यूज पीस ऑफ लैंड होता है, तो दे यूजुअली रजिस्टर देमसेल्व्स एज व्हाट? ट्रस्ट. इज इट ओके? और ये तो कंपनीज जो अपना चैरिटेबल विंग चलाती हैं, वो अपने आप को कैसे रजिस्टर करती हैं? Charitable companies. So it is easy for them to register as charitable company. So don't think too much about these things. You just remember that NGO can either be registered as society, trust, or as charitable company. But registration is compulsory. You can't run an NGO without registration. They are formal bodies. Next, you write. Next, scope of NGOs. Scope of NGOs. NGO कहाँ काम करते हैं? Where areas? What are the areas where NGOs work? So environment issues. Environment issues. For example, they work for climate. They fight against climate change, pollution. और किसके लिए? Coal fired power plants. क्या? Rivers. हाँ. Yes. और next, environmental issues के बाद human rights. They talk about human rights. Human rights में किसके लिए? Women, prisoners. Then prison rights. Do prisoners also have rights or not? Yes, of course. Prisoner है वो, रावण नहीं है. So they have rights. तो इनको rights, जैसे capital punishment के खिलाफ खड़े होना, bail के लिए fight करना, bail. Then they talk about LGBT group, LGBT rights. है ना, ट्रांसजेंडर्स वगैरह सब इसमें आ गया. Then we can also say child rights. ऐसे मतलब this human rights. जैसे इसमें सबसे बड़ी एनजीओ जो काम करती है वो है, करती थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल. एनवायरमेंट में एक सबसे बड़ी इंटरनेशनल एनजीओ थी, वो भी सबसे बड़ी इंटरनेशनल एनजीओ फॉर एनवायरमेंट वाज पीटा नहीं, वो तो एनिमल के लिए है. व्हाट वाज दैट? आई फॉरगॉट द नेम. ग्रीन पीस. ये है ना. तो दिस इज स्कोप. कौन से एरियाज? फिर कुछ एनजीओस ओनली डू द वर्क ऑफ सर्वे एंड रिसर्च. सिर्फ यही काम, मतलब दे विल नॉट वर्क फॉर वेलफेयर. उनका कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे. दे विल डू रिसर्च एंड एनालिसिस, सर्वे. जैसे एक एनजीओ है प्रथम. देयर इज एन एनजीओ कॉल्ड प्रथम डज अ सर्वे ऑफ RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, प्राइमरी स्कूल का सर्वे. आई विल टेल यू अबाउट प्रथम. देन एक ऑक्सफैम सिर्फ इनइक्वालिटीज के बारे में स्टडी करती है, मेनली इनइक्वालिटीज. देन देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड TRS, लेजिस्लेटिव रिसर्च. लॉज को पढ़ना, लॉज में रिफॉर्म सजेस्ट करना, बिल्स को क्रिटिसाइज करना, ये काम किसका है? TRS. आपको भी कोई लॉ पढ़ना हो, समझना हो, बिल को एनालाइज करना हो, कौन सी वेबसाइट? TRS, बेस्ट. देन द लास्ट स्कोप इज दे फिल द गैप्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस वर्ड, fill the gaps. Now they fill the gaps in those areas. कहाँ पे fill कर रहे हैं? In those areas where state is not able to reach, जहाँ state नहीं पहुंच पाती, या state is able to reach but lack resources. State is not able to reach. कहाँ देखिए, किन एरियाज में स्टेट नहीं काम कर पाती, वो है जैसे LGBT राइट्स, प्रिजनर राइट्स, या फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एक्सट्रीमली पुअर, very poor sections of society. Then acid attack victim, beggars, physically disabled. Acid attack victims, beggars, physically disabled. All these sections
the state is not able to reach. Reach हो नहीं पाती या पहुंचना नहीं चाहती, पहुंचना नहीं चाहती. It can, if it wants, it can reach, but it doesn't want to reach there. Okay. Then second section में हम लिख रहे हैं where state is able to reach, state is willing to reach, but state is lacking resources. So where the state is lacking resources, लिखिए state, for example, disaster management, sanitation and manual scavenging, disaster management, sanitation, manual scavenging, slums and rural development, and healthcare services. इसमें स्टेट ये सब कर तो रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स भी अलॉट करती है, बट स्टेट इज लैकिंग रिसोर्सेज टू डू दिस. जैसे कोविड-19 आया, वाज द स्टेट सेल्फ सफिशिएंट टू डू एवरीथिंग ऑन इट्स ओन? इट टुक द हेल्प ऑफ सीएसओस, है ना. कुछ काम जो स्टेट नहीं कर पा रही थी वो कौन कर रहा था? सीएसओ. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर फिलिंग द गैप्स. सो नेक्स्ट यू राइट, नेक्स्ट टॉपिक यू राइट रोल ऑफ एनजीओस और सीएसओस, एनजीओ या सीएसओस इन डेवलपमेंट प्रोसेस. देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा बस लिखने का ज्यादा है सब्जेक्ट, और इसमें बस आपके पास रेडी नोट्स होने चाहिए. बातें 4-5 वो घुमा फिरा के होंगी, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना. अब आपको वो 3-4 वर्ड्स बस समझने हैं, जैसे सोशल कैपिटल, फिलिंग द गैप्स, ये सब एम्पावरमेंट. एक बार आप ये वर्ड समझ गए, बस फिर राइटिंग प्रैक्टिस करके इनको लिखने की आदत डालनी है. दैट्स ऑल. Okay, so that is why I'm making you write. So what is the role of NGOs in the development process? So there are 6 roles. तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं, what is the role of CSOs in the development process या role of NGOs in the development process? The answer will be almost same. कई बार examiner uses the word CSO and NGO interchangeably, कई बार यूज कर लेता है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा whether he is referring to that umbrella term of CSO or whether he is referring to what? NGOs. Okay all of you. चलिए, तो ये क्या रोल है इनमें? फर्स्ट रोल एडवोकेसी. Advocacy means fighting for the rights of others. Fighting for the rights of others. Now they fight for the rights of others through which tool? Public interest litigation. They fight for the rights of others through public interest litigation. Now इसमें हमें कुछ एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे, जैसे भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन. It fought against the practice of instant triple talaq. क्या नाम? भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन. ऐसे नाज फाउंडेशन किसके लिए लड़े? LGBT ग्रुप, LGBT राइट्स. तो बेसिकली एडवोकेसी में यू मेनली फाइट फॉर व्हाट? ह्यूमन राइट्स. ऐसे ही Young Lawyers Association, they fought for women entry inside Sabrimala case. Vishaka, yes, Vishaka also you can write. Vishaka against, मैं इसको वैसे लिखा था honor killings. Oh sorry, this is for sexual harassment at workplace. But हाँ ठीक है, चलो advocacy. Then the second role of NGO is they act as watchdogs. On state. You know what is a watchdog? A dog which barks but will not bite. तो इसका काम है बस अवेयर कराना. They make people aware. So लिखो watchdogs. Watchdogs में जैसे हम लिखेंगे कि they promote transparency and accountability in the working of the state. मतलब ये स्टेट को मजबूर करते हैं. They compel the state to be more transparent and accountable in its working. So they act as watchdogs. अब कैसे watchdog बनते हैं ये? How do they become watchdogs? Now the biggest tool in the hands of NGOs to look into the working of the state is what? RTI, Right to Information, RTI Act. तो RTI से basically they extract information from the state. State कैसा काम कर रही है, काम कर भी रही है या नहीं कर रही है, सारी information कहाँ से निकल सकती है? RTI से. RTI is like a CCTV camera installed in the working of the state. सरकारी दफ्तरों में CCTV कैमरे की तरह. Now when NGOs they file RTI, they are collecting data, and they extract important information from data. इसको public administration में बोलते हैं separating voice from noise. So we have a lot of data which we collect by filing RTI, but that data has to be transformed into what? Information. Information is published usually in the form of report. तो जैसे मान लेते हैं MG नरेगा is a government scheme run by the state. Now whether people are allotted work or not, whether payments are being given on time or not, whether the beneficiaries are properly identified or not, all such data can be collected through what? RTI. अब इतना सारा data collect हुआ है, data collect करके उसमें से क्या extract करेंगे? Information will be extracted from the data. Now this information is published in the form of report. Now this report is given in the hands of the people. This report will be submitted to the people. कैसे people? ग्राम सभा को ये report submit कर देंगे. And then people will ask questions. किससे पूछेंगे questions? From the state about their working. People asking questions from the state directly. काम क्यों नहीं हुआ? पैसा लॉट क्यों नहीं हुआ? इतना डिले क्यों हो रहा है funds allocation में? But all that is because of the report generated by whom? NGOs. Because of the report generated by NGO. तो इस रिपोर्ट को हम इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? Collection of data, sharing it with people. This is called as social audit. तो social audit आपको जो भी governance लेगा next part, he will tell you the social audit thing. But मैंने आपको आज एक hint दे दी और इस रिपोर्ट को बोलते हैं social audit report. So one way of state acting as watchdog is what? Social audit. तो इसमें दो terms अपन लिख सकते हैं, तो audit करवाना, दूसरा होता है audit
and RTI. Can I say social audit has been made possible only because of what? RTI. अगर RTI नहीं होता तो social audit नहीं हो सकता. So social audit is promoting accountability. RTI is promoting transparency. So this is the link. RTI promotes transparency. Audit promotes accountability. Accountability का मतलब बहुत simple होता है. Answerability. I am answerable to whom? I am answerable to whom is why what is my accountability. So here the state becomes accountable for its actions to whom? People. So directly from the people. Directly people are extracting accountability from the state. That is the meaning of the word social audit. तो audit तो हो रही है, but कौन कर रहा है? People themselves are doing the audit. But that audit has been made possible only because of social audit report. Is it okay? Yes. Not always. Not always. अरे कई बार तो भैया काम ही क्या है? कहाँ गया वो? कई बार एनजीओ का काम ही क्या है? सिर्फ क्या करना? सर्वे एंड रिसर्च, सोशल ऑडिट रिपोर्ट बनाना, सोशल ऑडिट रिपोर्ट. कई तो काम ही यही करते हैं. तो अगर काम ही कर रहे हैं तो विल दे टेक फंडिंग फ्रॉम द स्टेट? मैं जिससे पैसे ले रहा हूं उसी की थोड़ी ना लूंगा यार. हाउ इज दैट पॉसिबल? फिर तो मेरी फंडिंग ही कट हो जाएगी. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सोशल कैपिटल? सोशल कैपिटल क्या है भाई? कलेक्टिव स्ट्रेंथ. अरे बचपन में वो ऐड नहीं देखा? एक लकड़ी टूट गई, दूसरी लकड़ी टूट गई, तीसरी टूट गई, सिंगल लकड़ी, पर जब एक गुच्छा आया लकड़ियों का तो वो नहीं टूट पाया. तो बस यही है. क्या इसको क्या कहते हैं? सोशल कैपिटल. यूनिटी इज स्ट्रेंथ का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टर्म है सोशल कैपिटल. नेक्स्ट यू राइट नाउ. Next, third thing, development process. They promote citizens' participation. They promote citizens' participation in governance. Now, citizens' participation in governance. ये क्या होता है? Citizens कैसे? When people are asking questions from the state, are people participating in the governance process or not? So instead of merely remaining as silent beneficiaries of state programs, मेरे को देखो भाई, she will manage. सारे. Now, if instead of being a passive beneficiaries of the state government schemes, now people are active participants in the development process by asking questions from the state. काम क्यों नहीं हो रहा है हमारा right. So this is enforced through the process of what? Social audit mechanisms. People are also filing what? RTI. People also they file RTI. So this is people's participation in governance process. Next, fourth point. NGOs are partners in PF and PI. Partners in PF and PI. What is PF PI? Policy formulation and policy implementation. Policy formulation and policy implementation. में ये लोग क्या हैं? Partners. Now what is PF PI? PF PI समझने के लिए let us go back to the concept of state. Now look at state. State का part कौन कौन होता है? Legislative and executive. Judiciary is not considered as part of the state. Now legislative and executive ये क्या काम करते हैं? देखिए, legislative तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंट करता है. एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट्स हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड टेम्पररी एग्जीक्यूटिव. ओके, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स ब्यूरोक्रेसी, द ब्यूरोक्रेसी व्हिच यू वांट टू एंटर. नाउ परमानेंट टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, बेसिकली योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये तो हो गए टेम्पररी. व्हाई वी आर कॉलिंग देम टेम्पररी? दे आर सब्जेक्ट टू चेंज आफ्टर एवरी 5 इयर्स. हर 5 साल में चेंज होंगे, बट ब्यूरोक्रेसी विल रिमेन द सेम. वंस यू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन थ्रू आउट योर लाइफ यू विल एंजॉय. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. समझ में आया डिफरेंस? अब इन दोनों में रिलेशनशिप कैसी है? व्हाट इज द रिलेशनशिप? द ब्यूरोक्रेसी इज द स्लेव while temporary executives are the masters. So you are about to become what? Slaves. Very good, congratulations. Now but yeah, slavery is interesting. You will enjoy the slavery. So now what is happening is why they are masters and why they are slaves. The reason is they enjoy the will of the people have represented them, people have sent them as their representatives. So अब ये क्या करेंगे? कुछ काम करेंगे ये? Nothing. Yes, so they do two things. They have right to formulate policies. Policy बनाना इनके हाथ में, right? Policy on health, policy on education, policy on CSOs, policy on agriculture. जो भी policy बनाएंगे, कौन बनाएगा? अरे कौन बनाएगा? Yes, ministers will make because they represent the will of the people. They are people's representative. तो जब election manifesto release होता है, तो basically वो कुछ नहीं है, एक तरीके का policy document है future का, कि अगर हम power में आते हैं, तो हम क्या policies adopt करेंगे. And if people have voted for that party, that means people agree to that policies. So they have right to formulate policy. Now who implements this policy? The bureaucracy. Bureaucracy is the implementation arm of political executives. The temporary bureaucracy जो पॉलिसी बना रही है उसको एग्जीक्यूट. तो दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एग्जीक्यूशन. तो मास्टर स्लेव रिलेशन है, मतलब जो भी ये बोलेंगे वो इनको आंख नाक बंद करके क्या करना है? इंप्लीमेंट. तो आपका एग्जाम में योर ब्रेन इज इंस्ट्रक्टिंग द पेन टू राइट. यस, कैन पेन इंस्ट्रक्ट? ये गलत लिख रहे हैं भाई, क्या लिख रहा है? कैन पेन से सो? नो. सो पेन इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. द रियल ब्रेन इज दिस. तो यहाँ पे भी वही है. एंड दे ऑल्सो लॉन्च द वेलफेयर स्कीम्स. और वेलफेयर स्कीम्स को भी इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? अरे कौन कर रहा है? ब्यूरोक्रेसी. सो हु कम्स इन कांटेक्ट विद वल्नरेबल सेक्शन डायरेक्टली? द ब्यूरोक्रेसी. वल्नरेबल सेक्शन को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए? सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन. इसलिए एथिक्स में आपके ये 3 टॉपिक मेंशन है, सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन. तो ये तो इनके लिए जो ब्यूरोक्रेसी में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम क्रिटिसाइज करते हैं ब्यूरोक्रेसी हैज आइवरी टावर मेंटालिटी. आइवरी टावर मेंटालिटी, यू अंडरस्टैंड? वंस यू बिकम अ सिविल सर्वेंट, पीपल आर योर सर्वेंट्स, यू आर नॉट सिविल सर्वेंट. तो ये है. तो दे इंप्लीमेंट वेलफेयर स्कीम्स, इंप्लीमेंट करेंगे इसको. ओके और नॉट? और ब्यूरोक्रेसी रोजमर्रा की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है. सर्विसेज, बिजली विभाग, पानी विभाग,
ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम भी। तो हु इज कमिंग इन कांटेक्ट विद पीपल ऑन एवरीडे बेसिस? द ब्यूरोक्रेसी। मंत्री तो कम इन कांटेक्ट विद पीपल आफ्टर एवरी 5 years। भारत जोड़ो, यस। तो ये सब चल रहा है। तो पीएफ पीआई इज क्लियर और नॉट? सो नाउ एनजीओस कैन हेल्प स्टेट इन बोथ पीएफ एंड पीआई, दोनों तरीके से हेल्प कर सकता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो हमने फोर्थ पॉइंट पे है हम। नाउ हाउ कैन एनजीओस हेल्प इन पीएफ एंड पीआई? पॉलिसी फॉर्मुलेशन पहले देखते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो इसमें लिखिए एनजीओस कैन प्रोवाइड इनपुट्स, एनजीओस कैन प्रोवाइड इनपुट्स टू द स्टेट, कैन प्रोवाइड इनपुट टू द स्टेट while formulating what? Policies. Inputs. Why? How they can provide inputs? Yes, they do surveys and research. ये क्या करते हैं? Survey and research. For example, प्रथम is an NGO. प्रथम एनजीओ देखिए क्या करता है, लिसन, डज अ हाउस होल्ड सर्वे ऑफ चिल्ड्रन, घर घर जाके सर्वे करता है बच्चों का, बच्चों को पकड़ता है घर से और उनसे क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। पहले पूछेगा बेटा आप कौन सी क्लास में हो, बच्चा कहेगा अंकल मैं 5th क्लास में हूँ, फिर उसको देंगे 3rd क्लास के सम सॉल्व करने के लिए एंड ही विल बी मेड टू रीड टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लास 3। इफ ही कैन डू सो देन ही इज लर्निंग समथिंग इन स्कूल, इफ ही कैन नॉट डू सो ही इज नॉट लर्निंग एनीथिंग इन स्कूल। ये इशू है। अब प्रथम ने सर्वे में अपने क्या देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट लर्निंग एनीथिंग इन स्कूल। तो 5 क्लास का बच्चा 3rd क्लास के सम सॉल्व नहीं कर सकता, 3rd क्लास का बच्चा 1st क्लास के मैथ सम सॉल्व नहीं कर सकता। तो मतलब बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं बट नॉट लर्निंग एनीथिंग इन स्कूल, वो सीख नहीं रहे। तो ये प्रॉब्लम किसने हाईलाइट करी? प्रथम अपने सर्वे में। सर्वे का नाम है ASER, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एंड दे हाईलाइटेड द प्रॉब्लम ऑफ पुअर लर्निंग आउटकम्स, पुअर लर्निंग आउटकम्स, दिस वाज हाईलाइटेड। मतलब अब सरकार को समझ में आ गया कि जब वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे 2020, उनका सारा फोकस किस पर रहेगा? अरे सारा फोकस किस पर रहेगा? टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स, टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम। और जब प्रथम अपनी रिपोर्ट बनाएगी तो प्रथम विल नॉट जस्ट स्टॉप एट द सर्वे ओनली, प्रथम विल आल्सो गिव सजेशंस कि ऐसा क्यों है, व्हाई देयर आर गैप्स एंड हाउ द गैप्स कैन बी फिल्ड। ये सारी चीजें एनजीओ विल टेल। सो दे आर हेल्पिंग इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कैसे? दे हैव ग्राउंड नॉलेज, दे हैव ग्राउंड नॉलेज of local resources and constraints, so they can make what they can do, efficient utilization of resources, they can help the bureaucracy in efficient utilization of resources। तो आप भी जब सिविल सर्वेंट बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे, सारा काम किससे करवाएंगे? एनजीओ। इनको शौक भी है काम करने का, करो तुम काम। आपकी रात को पार्टी चलेगी, काम ये करेंगे। Are you getting or not? तो ये है फीडबैक। इसमें आप सजेशंस एंड फीडबैक अगर चाहें तो लिख सकते हैं, सजेशन एंड फीडबैक। नेक्स्ट 6th is fifth point, right? 5th main point, catalyst of social change, they act as catalyst of social change। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट करता है। तो लिखो दे ब्रिंग स्टेट इनटू एक्शन, दे ब्रिंग स्टेट इनटू एक्शन टू ब्रिंग सोशल चेंज, टू ब्रिंग सोशल चेंज। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट 2005 was passed because of the efforts of RTI Act 2005 was passed because of the efforts of an NGO MKSS। What is the name of the NGO? मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन। अरविंद केजरीवाल was part of this NGO also। तो ये MKSS, they were behind pushing the state for, they were pushing the state continuously for which act? RTI। तो इनके efforts की वजह से। Then दूसरा लोकपाल बिल 2013, लोकपाल बिल, अब तो कुछ नहीं लोकपाल, लोकपाल बिल 2013 was passed because of the efforts of NGOs। Which NGO? India Against Corruption, IAC, Anna Hazare and Arvind Kejriwal, India Against Corruption। Then section 377 was decriminalized, section 377 was decriminalized। Basically ये point, ये वाला point, catalyst for social change and your advocacy can be clubbed। तो there may be advocacy for what? Social change। ये club किया जा सकता है दोनों point, क्योंकि ये सारे points भी almost same है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन social change, LGBT social change, women entry inside the temple is also social change। Is it okay? Next click here। Next, they are service providers, 4th point, sorry 6th, they are service providers। सर्विस प्रोवाइडर्स में किसको सर्विस देंगे? किसको सर्विस देंगे? वल्नरेबल सेक्शन। तो सर्विस प्रोवाइडर्स में 2 पार्ट में हम लिख सकते हैं, दे विल फिल द गैप्स एंड दे प्रोवाइड सर्विसेज ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। 2 मेन डिजास्टर, कोविड-19 पैंडेमिक में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, यू नो, देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग, एंड सुनामी फिल द गैप्स तो वी हैव ऑलरेडी सीन, बट वी विल जस्ट राइट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फिलिंग द गैप्स। किसको सर्विस? वल्नरेबल सेक्शन। तो लेट अस सी, और उन जगहों पे दे विल फिल द गैप्स व्हिच इज नॉट रीच्ड बाय हुम? स्टेट, जहां स्टेट नहीं पहुंच पा रहा है। किन किन को सर्विसेज दे रहे हैं देखिए, जैसे देयर इज एन एनजीओ कॉल्ड छाया फाउंडेशन, एक एनजीओ है छाया फाउंडेशन। छाया फाउंडेशन वर्क्स फॉर एसिड अटैक विक्टिम्स, वर्क्स फॉर एसिड अटैक विक्टिम्स, ऐसे हाइफन कर करके लिख लो, एसिड अटैक। देन सार्थक फाउंडेशन, सार्थक फाउंडेशन ये किसके लिए काम करता है? डिसेबल्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी। Then you have your help age India, help age, AGE, age India, this works for elderly। बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन works for children, child labor, they fight against child labor, बचपन बचाओ आंदोलन।
देन कॉमन कॉज, ये जबरदस्त काम करती है। कॉमन कॉज किसके लिए काम करती है? कॉमन कॉज क्रिटिकली इल पेशेंट्स, सीआईपी, कॉमन कॉज एनजीओ वर्क्स फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट्स। इनको क्या चाहिए क्रिटिकली इल पेशेंट्स को? है ट्रीटमेंट, मेडिसिन और स्पेशल केयर और फंडिंग और मौत। दे वांट डेथ, सो दे आर फाइटिंग फॉर यूथनेसिया। यूथनेसिया, क्रिटिकली इल मतलब देयर इज नो scope for treatment, no going back, there is no chance, no possibility of going back, so they demand what? Euthanasia for these. अभी जैसे common cause NGO is fighting that the rabies patient should be given euthanasia. Rabies, you know, rabies, अब rabies क्या है? नॉन रिवर्सिबल है, कैन नॉट बी ट्रीटेड, बॉडी में चेंजेस आते हैं उसमें और लिम्स फोल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, which is extremely painful for the patient. No degree of painkiller, highest degree of painkiller also cannot relieve the pain which is caused by rabies. So instead of people suffering in pain, we should allow what? हमें क्या allow करना चाहिए उनके लिए? Euthanasia. Are you getting or not? तो ये इसकी स्टोरी euthanasia. फिर there is NGO called missionaries of charities. Missionaries of charities. Missionary of charities. They work for leprosy patient. Leprosy patients suffer from stigma of untouchability. You know leprosy? कोड़ की बीमारी is leprosy. कोड़ में स्किन के ऊपर lumps आ जाते हैं, lumps. तो देखने में बहुत ही स्कैरी होता है. Not only scary, the patient suffer from stigma of untouchability. तो उन पेशेंट्स की हेल्प करता है कौन? मिशनरीज ऑफ चैरिटी. कौन सी एनजीओ है? मदर टेरेसा वाली. मदर टेरेसा को पीस नोबेल पीस प्राइज इसलिए मिला था बिकॉज शी वाज वर्किंग फॉर लेप्रेसी पेशेंट्स, जिनके लिए कोई काम नहीं करना चाहता, उनके लिए कौन काम कर रहा है? एनजीओस. आया समझ में? ये सारे वल्नरेबल सेक्शन जहां स्टेट नहीं पहुंच पाती उनके लिए स्टेट. सो दिस इज व्हाट इज योर डेवलपमेंट रोल ऑफ एनजीओस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस. नेक्स्ट यू राइट प्रॉब्लम्स विद एनजीओस. What problems are faced by NGOs? Now all of you write problems with NGOs. First problem, politicization of NGOs. First problem, politicization of NGOs. Politicization. Now what is politicization of NGOs? NGOs receiving funds from political parties. NGOs receiving funds from political parties. Political parties. And they implement the agenda of. And they implement the agenda of. किसका agenda implement करती हैं? Political parties. Now when they implement agenda of political parties, लिखो, they protest against the state. They protest against the state simply for the sake of protest. They protest against the state only for the sake of protest. Now is it illegal or is it unethical? Unethical. ठीक है ना? So it is unethical, not illegal to receive funds from political parties. Next, second point, diversion of funds. Diversion of funds. What is diversion of funds? Yes, a diversion of funds is done in three ways. There are three ways to divert funds. Now, three ways to divert funds. Likhiye. First, using funds for purpose other than the stated purpose. Funds for purpose other than the stated purpose. Second, money laundering. Funds used for money laundering activities. Money laundering activities. And third, over expenditure on administrative expenses. And over expenditure on administrative expenses. You know what are administrative expenses? क्या खर्चा? Day to day, yes, बिजली, पानी, employee salary, all these. So too much expenditure on administrative expenses. तो फंड रिसीव हुआ, सारा फंड ही सैलरी वैलरी में चला गया. वेलफेयर के लिए तो फंड बचा ही नहीं. Yes, तो कई एनजीओ में तो ऐसे भी होता है 70% ऑफ द फंड्स इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ओनली 30% इज यूज्ड फॉर वेलफेयर एक्टिविटी. सीईओ वगैरह की सैलरी बहुत ज्यादा होती है. मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है एनजीओस में? ब्लैक मनी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी बाय हाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड्स. तो एनजीओ के पास ब्लैक में पैसा जाएगा, वो व्हाइट होते होते लेयरिंग होते होते कैसे होता है लॉन्ड्रिंग? यू नो एनजीओ एन1 के पास ब्लैक मनी आई, मेरे पास मान लो जैसे ब्लैक मनी है, तो आई गेट ब्लैक मनी एंड गिव इट टू एनजीओ एन1. अब मुझे ब्लैक को व्हाइट करना है, तो व्हाट विल आई डू? व्हाट एन1 विल डू? एन1 विल गिव इट टू एन2, एन3, एन4, एन5, ऐसे करते 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 एन200, एंड देन आई विल रिसीव मनी इनटू माय अकाउंट फ्रॉम एन200. तो जो ब्लैक थी वो क्या हो गई? व्हाइट. तो इसको बोलते हैं लेयरिंग. इस प्रोसेस को यू हैवंट डन मनी लॉन्ड्रिंग इन सिक्योरिटी इश्यूज? नॉट येट. ओके, लेयरिंग. मनी लॉन्ड्रिंग मतलब लेयरिंग, बस इस बात का ध्यान रखें. नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट थर्ड, पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एनजीओस. पुअर, अच्छा, यूज फॉर पर्पस अदर देन द स्टेटेड पर्पस मतलब देखिए कई बार क्या होता है एनजीओस में, व्हाट हैपेंस समटाइम्स इज, मान लो फंड रिसीव किया हेल्थ के लिए, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज इन ट्राइबल एरियाज. ओके, इसके लिए हेल्थ केयर के लिए. नाउ इंस्टेड ऑफ गिविंग हेल्थ केयर, religious conversion is going on in tribal area, so you are using funds other than the stated purpose. What was the stated purpose? Health. What is the other purpose? Religious conversion. Okay or not? ये चलो. Next लिखिए. Poor capacity building for NGOs. Poor capacity building for NGOs. So what is poor capacity building? A, lack of skilled trained professionals. Lack of skilled trained professionals. NGOs को भी एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटर्स मस्ट बी स्किल्ड. हमने लिख तो दिया ग्राउंड नॉलेज एंड ऑल, बट ग्राउंड नॉलेज लेने के लिए यू नीड स्किल्ड मैन फोर्स. एंड सेकंड poor capacity building. Most of the NGOs are not digitalized. Most of the NGOs are not digitalized. Now who can help NGOs in the process of digitalization? State. Again, the state can help NGOs in process of digitalization. Now what is the benefit of digitalization? लिखो ब्रैकेट में, benefit of digitalization. First point, क्या benefit है? Faster interaction with the state. Faster interaction with the state. जैसे कैसे faster interaction? NGOs who are digitalized need to register themselves on a portal, on a नीति आयोग portal called as NGO दर्पण. अब सरकार क्या करती है? Government या state interacts with NGO only through what?
एनजीओ दर्पण, एनी अनाउंसमेंट, डिसबर्सल ऑफ फंड्स, एनी न्यू स्कीम, एवरीथिंग इज अनाउंस्ड थ्रू व्हाट, एनजीओ दर्पण। तो अगर मैं कोई एनजीओ खोल रहा हूँ और अगर वो एनजीओ दर्पण पे एस्टैब्लिश नहीं है, आई लॉस माय कॉन्टैक्ट, आई लूज माय कॉन्टैक्ट विद हुम, स्टेट। सो इफ आई वांट टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द स्टेट, आई नीड टू रजिस्टर माय एनजीओ ऑन एनजीओ दर्पण। बट उसके लिए मेरी एनजीओ कैसी होनी चाहिए? सॉरी वी गॉट डिस्कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। वी वर ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ एनजीओस, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिजिटलाइजेशन, फास्टर इंटरेक्शन विद द स्टेट। सेकंड इज प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मींस कैसे एनजीओस कैन वॉलंटरली डिस्क्लोज देयर ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन देयर वेबसाइट, मतलब किसी एनजीओ की ऑडिट रिपोर्ट देखनी है उसकी वेबसाइट पे जाके देख ली। नेक्स्ट, एंड इंक्रीजेस द रीच ऑफ एनजीओ। डिजिटलाइजेशन इंक्रीजेस द रीच ऑफ एनजीओ। फॉर एग्जांपल, देयर इज एन एनजीओ व्हिच इज टीचिंग स्टूडेंट्स, पुअर स्टूडेंट्स। नाउ पुअर स्टूडेंट्स कैन बी reached more through digitalization. Agreed or not? Yes. Next लिखिए, point number fourth, lack of transparency and accountability within NGOs. Benefit नहीं कर रहे हम, नहीं, benefit is over. Fourth main point, lack of transparency and accountability within NGOs. Now NGOs को चाहिए कि state transparent और accountable हो, but उसके लिए पहले NGO को खुद कैसा होना है? Transparent and accountable. तो NGOs should be transparent and accountable. How they should be transparent? लिखो transparent पे नीचे आगे बना के, they should be open to RTI. They should be open to RTI. Then comma, voluntarily disclose their source of fund, and publish audit reports on their website. ये इनको खुद करना चाहिए क्योंकि चाहती है स्टेट ऐसा करे भाई, बट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, फर्स्ट यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। अकाउंटेबल में दे शुड बी ओपन टू थर्ड पार्टी ऑडिट। दे शुड नॉट से नो टू ऑडिट। जब सब कुछ साफ सुथरा है, देयर इज नो डाइवर्जन ऑफ फंड, देयर इज नो मनी लॉन्ड्रिंग, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन गोइंग फॉर ऑडिट? तो दे शुड बी ओपन फॉर ऑडिट। तो इसमें एक पॉइंट हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इसी में, इफ द स्टेट्स आर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, सॉरी इफ एनजीओस आर T&A, it will improve trust between state and NGO. The trust between state and NGO, ये definitely होगा। Next, fifth point, NGOs work in silos. SILOS, silos का मतलब लेवल नहीं, silos का मतलब जैसे they work independent of each other, they don't coordinate their efforts। तो लिखो NGOs work independent of each other without coordinating their efforts, and this leads to what? इससे क्या होता है? Duplication. This leads to their duplication of efforts. Same काम। अच्छा, who should then coordinate between NGOs? State should coordinate between different NGOs. That is what we want to say. Next, लिखिए sixth point and the most important point, poor interaction between state and NGO. Yes, what is this poor interaction between state and NGO? अब क्यों दोनों लड़ रहे हैं आपस में? The journey started as what? The journey started as partners, but now they want divorce. Why? What is the reason why they want to separate from each other? कुछ प्रॉब्लम स्टेट के साथ है, कुछ प्रॉब्लम एनजीओस के साथ। So what is the problem with the state? The state tries to over-regulate. State क्या करने की कोशिश करता है? Over-regulate the NGOs. So what is over-regulation? लिखो, by cutting the source. Over-regulate के सब पॉइंट्स हैं A, B, C, D. A, by cutting the source of fund. ब्रैकेट में, not allowing NGOs to mobilize fund. अब देखिए एनजीओ की ऑक्सीजन क्या है? फंड्स। इफ यू कट देयर फंड्स, यू कट देयर ऑक्सीजन। एनजीओ कैन नॉट वर्क विदाउट फंड्स क्योंकि एनजीओ इज नॉट एंगेज इन एनी एक्टिविटी व्हिच इज जनरेटिंग प्रॉफिट। सो दिस इज देन बी पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेबलिंग एनजीओस एज एंटी नेशनल और एंटी डेवलपमेंट। इनको एंटी नेशनल और एंटी डेवलपमेंट डिक्लेयर करना। इफ दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टेट, अगर ये प्रोटेस्ट करते हैं स्टेट के अगेंस्ट, स्पेशली इन द नेम ऑफ ट्राइबल राइट्स। लिखो, स्पेशली इन द नेम ऑफ ट्राइबल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ट्राइबल राइट, ह्यूमन राइट, माइनॉरिटी राइट्स, दलित राइट्स, एनवायरमेंट। इससे रिलेटेड अगर कोई भी एनजीओ काम कर रही है तो स्टेट का वो एक तरीके से क्या कर रही है? प्रोटेस्ट। इट इज अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट, एनी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टेट मींस स्टेट विल लेबल दैट एनजीओ एज एंटी नेशनल और एंटी डेवलपमेंट। ये बेस्ट तरीका है। एंड वंस यू बिकम एंटी नेशनल एंड एंटी डेवलपमेंट, यू कैन बी बैंड अंडर यूएपीए एक तरीका है इसका बेस्ट। नेक्स्ट, थर्ड, सी, स्टेट टारगेट स्पेसिफिक एनजीओस। कुछ स्पेसिफिक एनजीओस को स्टेट टारगेट करता है, लाइक स्पेसिफिक एनजीओस लाइक pollution and climate change NGOs, जो भी एनवायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट बेस्ड एनजीओस। ह्यूमन राइट्स एनजीओ, ह्यूमन राइट में भी स्पेसिफिक टारगेट किसको करते हैं? माइनॉरिटी के राइट्स की जो बात करेगा, माइनॉरिटी राइट्स। देन रिलीजन बेस्ड एनजीओस, इसमें दो स्पेसिफिक टारगेट है रिलीजन बेस्ड एनजीओस में, इस्लामिक एनजीओस एंड क्रिश्चियन एनजीओस। इस्लामिक एनजीओस के ऊपर क्या एलिगेशन लगाते हैं? दैट दे आर फंडिंग टेररिज्म। एंड क्रिश्चियन एनजीओस पे क्या एलिगेशन लगाते हैं? कन्वर्जन, दे आर गोइंग फॉर रिलीजियस कन्वर्जन। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अब इसका एग्जांपल सबसे बड़ा, एमनेस्टी इंटरनेशनल वाज टॉकिंग अबाउट द माइनॉरिटी राइट्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल वाज टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटी राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370 वाज abolished।
तो इसका पत्ता ही साफ कर दिया. The foreign funding to Amnesty International was cut. If you cut foreign funding, you cut the oxygen, and therefore Amnesty International had to wind off from India. खत्म हो गई Amnesty, चली गई. ऐसे ग्रीन पीस के अगेंस्ट, ग्रीन पीस की भी फॉरेन फंडिंग कट कर दी, and they were also in favor of cutting the foreign funding for missionaries of charities. Missionaries of charities, इनकी भी फॉरेन फंडिंग कट करने के चक्कर में थे. But luckily their foreign funding was not cut. So there was winding up of Amnesty, Greenpeace. अब इंडिया में काम नहीं करती. Missionary of charities continuing to work, but they were ready to cut their funding also. So this is what is we call as, इसको क्या कहेंगे? State is what? Over regulating the NGOs, and the best way to over regulate is to cut the funding. Second point. The state does not define the role and goal of NGOs clearly. State does not define the role and goal of NGOs clearly, leading to insufficient and irregular transfer of funds. Insufficient and irregular transfer of funds. क्या मतलब? Goal and role is not defined. भाई जब स्टेट को पता है कि it is not able to reach everyone, the state should allot certain funds only for whom? NGOs. But वो तभी हो पाएगा when the role is clearly defined. For example, state is running midday meal scheme. Now while formulating the scheme, the state can say that midday meal in tribal affected areas will be given by NGOs. अब कितने tribal affected areas हैं, उनमें कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से क्या allocate किया जा सकता है? Funds. But उसके लिए role and goal of the NGO should be defined clearly. Next लिखिए, any criticism by NGO of state. अगर NGO स्टेट को क्या कर रही है? क्रिटिसाइज कर रही है, तो क्या होता है? What happens? The state declares it as anti-national. Instead of taking criticism as a positive feedback. तो थोड़े दिन पहले हिंदू में, थोड़े दिन तो 4-5 महीने हो गए, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था कि स्टेट बैन्स CSOs. कैसे करता है बैन? देखिए, UAPA एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA 2010. देन वी हैव UAPA एक्ट. UAPA एक्ट में उन एनजीओस को जिसको कैसे डिक्लेयर कर देता है? एंटी नेशनल, जिनको डिक्लेयर कर दिया. देन FCRA टू कट, दिस इज फॉर फॉरेन फंडिंग, दिस इज टू कट फॉरेन फंडिंग. तीसरा तरीका है एनजीओस पे कंट्रोल करने का, दैट यू कैंसिल देयर लाइसेंस ओनली, यू डीरजिस्टर देम. सो यू आर रजिस्टरिंग विद द स्टेट हैज राइट टू डीरजिस्टर योर NGO. So not only registration, state has right to deregister. और fourth, इसमें एक और क्या बोला था? They said that I will tell you, I forgot this. Next you write. अब NGOs के साथ क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं है कि NGOs don't have any problem. They also have multiple issues. इनके क्या issues हैं NGOs के? एक तो NGOs खुद, NGOs themselves are not transparent and accountable. Second, NGOs they divert funds. You know, 3 ways they divert fund: money laundering, other purpose, using funds for other purpose, and third is overuse of money in administrative expenses. So this is problem with the NGO. Third, NGOs who receive foreign funds engage themselves in foreign funded activism. किसमें फंस जाते हैं ये? Foreign funded activism. What is foreign funded activism? लिखो. Yes, implementing the agenda of foreign countries. Against the nation of foreign countries, especially the enemy state. So what they do in implementing the agenda of foreign countries? They protest against the development projects of the state. They protest against the development projects of the state. They mean who? NGOs. Now, in 2014, please write, in 2014, IB report. कौन से ईयर में? 2014. Highlighted FFA. What is FFA? Foreign funded activism. को highlight किया. किसने highlight किया? Yes, IB. What is IB? Intelligence Bureau ने एक रिपोर्ट दी. उसमें कहा कि many foreign funded NGOs, many FF NGOs are anti-development, leading to the loss of 2 to 3% of GDP. Full stop. They target specific development projects like they mean who? NGOs. They target specific development projects which are significant for the development of the country. कुछ specific projects को target करते हैं which are significant for the development of the country. You know, getting, like for example, like Greenpeace. अभी बताया था ना, Greenpeace protested against Kundakulam nuclear power plant. You know, where is Kundakulam nuclear power plant? Tamil Nadu. Kundakulam nuclear power plant. Coal-fired power plants. Coal-fired. Is it possible in India to generate energy without coal? No. The energy requirements इतनी ज़्यादा हैं. Population base is so high. So coal-fired power plants and GM crops. And genetically modified crops, GM crops. तो इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे only for the sake of protest, ताकि ये प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट ना हो पाए, leading to significant loss of GDP for the country. Is it okay? तो NGOs ये सब कर रही हैं. अब क्या करें? To bridge the trust between NGO and state. लिखो, how to bridge the trust between NGO and state. थोड़ा काम स्टेट को करना है, थोड़ा काम NGOs. So both again we can divide. You will write it on your own. I will just give you hint. How to bridge the trust
व्हाट स्टेट शुड डू, अरे जो भी प्रॉब्लम्स लिखी हैं उसी को क्या लिख दो, सोल्यूशन बना के लिख दो यार, खत्म, इसमें क्या करना है। व्हाट स्टेट शुड डू, शुड नॉट ओवर रेगुलेट, लाइक ये भी तो बताओ, लाइक अलाउ टू मोबिलाइज फंड्स, दे शुड बी अलाउड टू मोबिलाइज फंड्स। दूसरा, क्रिटिसिज्म बाय एनजीओस मस्ट बी टेकन एज व्हाट, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। अच्छा, लड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ है, लड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। भाई स्टेट कह रहा है कि एंटी डेवलपमेंट और एंटी नेशनल डिक्लेयर करते हैं, तो इसके लिए क्या करना है स्टेट को, स्टेट शुड मेक एनजीओस एज पार्टनर्स, पार्टनर्स कैसे पार्टनर बनाए, इन डेवलप, पूरा लिखना, इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्टेट शुड मेक एनजीओस एज पार्टनर्स इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हाउ टू मेक देम पार्टनर्स, बाय अलाउइंग देम टू मेक environment impact assessment reports and social impact assessment report. Environment impact assessment means to study the impact of the development project on environment and to study the impact of development projects on society. So let NGOs make this report. Now will this improve the trust deficit between state and NGO, है ना, बिल्कुल improve होगा। बिकॉज सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, लोगों पे क्या इंपैक्ट आया है, मान लो कितने ट्राइब्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रिहैबिलिटेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें सोशल इंपैक्ट, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी कैसे अफेक्ट हो रही है, दैट इज इन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। सो व्हेन द स्टेट इज मेकिंग दीस रिपोर्ट्स, when the state is making, sorry, when NGO is making these reports, NGOs will also provide what, feedback and suggestions how to minimize impact on impact of development projects, कैसे मिनिमाइज किया जाए इम्पैक्ट को, इसके बारे में दे विल प्रोवाइड देयर सजेशन। बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच, इससे फायदा क्या होगा, एनजीओस विल फील दैट दे आर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, दे आर स्टेक होल्डर्स इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एनजीओस को क्या करना है, फर्स्ट दे हैव टू बी व्हाट, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, वॉलंटरी डिस्क्लोजर लिख लोगे अपने आप। देन थर्ड, दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इनको ये समझना चाहिए क्रिटिकलिटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एंड नॉट प्रोटेस्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रोटेस्ट, एंड नॉट प्रोटेस्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रोटेस्ट। इज इट ओके? एंड व्हाट दे शुड डू, they should help the state, they should help the state in minimizing the impact of development project on environment and people, rather they should help the state। तो जब प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और डिस्कशन डिबेट करेंगे, then the state will make you as a stakeholder or a partner in the development project। clear all of you? तो थोड़ा काम स्टेट करेगी, थोड़ा काम NGOs, to make them what, active partners again। so this is what we say। Now I am again and again saying that state must allow NGOs to what, mobilize funds, that is their oxygen। तो लिखो source of funds for NGOs, source of funds for NGOs। so there are four main sources of fund। one is your सबसे पहले तो state is the biggest source of fund, then foreign funding, दूसरा ये, then individual donations, and last market can also fund NGOs। Now market will fund NGOs through corporate social responsibility, CSR। अगर स्टेट फंड कर रही है तो therefore NGO must come under the ambit of RTI, आना चाहिए, क्योंकि you are using which money, public money means you have to be transparent। foreign funding, अगर foreign funding आ रही तो उसको रेगुलेट करती है through FCRA 2010। now the next two topics that we will do is RTI and FCRA, whether NGOs come under the ambit of RTI or not। ठीक है ना, FCRA को पहले देख लेते हैं। so give a heading, Foreign Contribution Regulation Act, Foreign Contribution Regulation Act। now this act was passed in 2010 and amended in 2020। so when was this act passed, 2010 and amended in 2020। so what is this 2010 act? FCRA prohibits individuals from receiving foreign funds। कुछ individuals foreign fund receive नहीं कर सकते, is not there। अच्छा लीव, हाँ अच्छा। so prohibits individuals from receiving foreign funds। ये तो कौन से individual, जैसे journalist, judges, electoral candidates, ये सब तो foreign funds receive कर ही नहीं सकते, they are prohibited। so when Mohammed Zubair is receiving foreign funds, is he violating FCRA? yes, because he is having a media house, he is running a media house, so they cannot receive foreign funds। second, prohibits organization of political nature, from foreign funds, from receiving foreign funds को FF, short में FF। now organization of political nature, they cannot receive foreign funds at all, है ना, but the problem is they have not defined the word organization of political nature। so can political parties receive funds? no। yes, कैसे, is political party an organization of political nature or not? yes, so they cannot receive foreign funds, but FCRA was amended recently which allowed political parties to receive foreign funds। next, third, NGOs who receive foreign funds, who need foreign funds, NGOs who need foreign funds, जिनको foreign funds चाहिए, must apply for FCRA license, who will issue FCRA license? Ministry of Home Affairs। NGOs are regulated by Ministry of Home Affairs, so only if they get FCRA license they will be able to receive foreign funds, and they have to open their FCRA account in SBI।
कौन से बैंक में खोलना है अकाउंट? एसबीआई में खोलना है. दूसरा, the license will be valid only for a period of 5 years, so you have to renew your license after every 5 years. And fourth, NGOs who have FCRA license, जिनके पास ये लाइसेंस है, they have to comply with certain conditions. What conditions they have to comply? First, they have to file annual audit report. They must file annual audit reports. They should not divert funds. Not divert fund means they have to use it strictly for the purpose for which the fund has been transferred. And C, not to use funds for any anti-national or anti-development activity. Not to use funds for anti-national or anti-development activities. इनके लिए भी funds use नहीं करने हैं. Okay, getting? तो ये अगर किसी भी कंडीशन से, if you don't comply with any of the condition, your registration can be cancelled. It is in the hands of the state. Now next 2020 में क्या changes आए? What changes have been made in 2020? One thing we can say clearly is 2020 changes have made FCRA very, very stringent. So it made FCRA very stringent. For example, now civil servants cannot receive foreign funds. आएंगे भी कहाँ से? They cannot receive foreign funds. But जब सर्विस में जाते हैं बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं. This is first. Second, what else they can do? What else change have been brought? Re-granting has been prohibited. इसको बिल्कुल खत्म कर दिया. Re-granting. What is re-granting? देखो see here. Let us suppose there are three NGOs. N1, N2, N3. All three have FCRA license. सबके पास FCRA license है. But major NGO which is receiving a good chunk of foreign funds is which NGO? N1. Now re-granting says that N1 can transfer funds to N2 and N3, provided N2 and N3 also have which license? FCRA license. This was allowed in 2010, which has been completely banned in 2020. Why? Money laundering. The main reason is money laundering को ban करने के लिए. पर इसको हम over regulation में डालेंगे. Why? मैं ये जो छोटी-छोटी NGOs हैं, ये कई बार they depend totally on the funds received by N1, bigger NGOs. They will all finish off or not. Money laundering is one aspect, that is okay. But there are other ways to control money laundering. That doesn't mean you will ban re-granting. There may be NGOs dependent. Then third. Now, what was the rule earlier? FCRA account can be opened in SBI. Now FCRA account again in SBI, but only in New Delhi branch of SBI. So NGO working in Kanyakumari or Northeast or Rajasthan will have to again and again come to Delhi to operate the account. Again, this is over regulation or not? Yes, SBI tak theek tha, but New Delhi. Fourth, administrative expenses can be only 20% of the foreign funds received. Only 20% of the foreign funds. इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए administrative expenses. क्या मतलब इस चीज का? हाँ? Welfare. But is this also over regulation? Yes. There may be many NGOs who are doing the work of research and survey. Research and survey requires lot of administrative expenses. उनको भी 20% कर दिया. Blanket rule कैसे बना सकते हो आप? Earlier it was in 2010 it was 50% of the administrative expense. Is this okay? 50% administrative expenses okay or not? Yes. 20% is too less. अब बार-बार कहाँ जाना है? वैसे भी account operate करने New Delhi. Will this also increase administrative expense? Yes. Then fifth. अब पैदल चल के तो जाएगा नहीं आदमी दिल्ली बार-बार. Yes. And fifth लिखो इसमें. NGO receiving FF will have to submit Aadhaar details. Of its employees, which is a violation of right to privacy. तो ये कहाँ लिखा है कि NGO में काम करने के लिए आपको क्या सबमिट करना है? आधार. Right to privacy is a fundamental right. Employees का आधार. Next. मैंने आपको बताया थे you have to comply with certain conditions. Now the government feels that a particular NGO is not complying with certain conditions. So pending inquiry, the government could suspend the license for a period of 6 months. Pending inquiry, लिखना नहीं सुना. Pending inquiry, the government can suspend the license for the NGO for how many months? 6 months. But now in 2020, pending inquiry, government can suspend the license for 1 year. मान लो pending के बाद कुछ नहीं मिला, 1 साल तक NGO will not be able to receive what? Foreign funds. Is this again over regulation or not? तो लिखो suspension of license, pending inquiry. हाँ, क्या है pending inquiry? Can be done for a period of 6 plus 6 months. Okay, all of you, clear or not? Is this again over regulation? Yes. 6 महीने फिर 6 महीने. मतलब unnecessary government is trying to make FCRA more and more stringent. So that is about your FCRA. Next, अब दूसरा topic, RTI, whether NGOs come under the ambit of RTI or not. So there was a debate. NGOs कहते हैं they are not public authorities, they are not established by state. तो हम RTI के अंदर क्यों आए? नहीं आएंगे. State कहती है क्यों नहीं आओगे? Especially if you are receiving for state funds. तो अब देखिए क्या है कि डिबेट हुआ और इसको सॉल्व किया सुप्रीम कोर्ट ने in 2019. लिखो 2019 DAV कॉलेज सुप्रीम कोर्ट, DAV कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट,
versus director of public instructions. Director of public instructions. ये name of the case है जो कह रहा है RTI. तो कोर्ट ने क्या कहा? फर्स्ट, NGOs which are substantially funded, NGOs which are substantially funded by the state, substantially funded by the state, comes under the ambit of RTI, comes under the ambit of RTI. So those NGOs which are, the keyword here is substantially funded. So all NGOs receiving state funds will not come under the ambit of RTI. Only those NGOs which are substantially funded by the state will come under the ambit of RTI. So underline the word substantial. Now we will define the word substantial. So इसमें लिखो, second point, the court did not define the word substantially. Let us define the word substantial. What is the meaning of the word substantial? अब कोर्ट ने इसको objectively define नहीं किया. लिखो, the court did not define the word objectively. Did not define the word objectively. But said what it said. Substantial means a large portion of funds. It means a large portion of funds, which may not necessarily be more than 50% of the total funds. Be more than 50% of the total funds. What are the keywords? Large portion. Large portion. अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, देखो ध्यान से. मान लो NGO N1 has a total funding of 10 CR. Total funding is 10 CR. Out of 10 CR, 4 CR is given by the state, or rest 6 CR is coming from donations. Now 4 crore from the state. Is it a substantial amount? Is it a large amount? Yes. He says no. That means there is what? Confusion, because the court has not defined the word substantial. Large money कितनी है? But अगर एक basic idea लेके चलें, 4 crore in itself is a large amount. Is it more than 50%? No. Should it be more than 50%? No. क्योंकि लिखा है not necessarily more than 50%. तो 4 crore in itself is a large amount. तो अगर मान लो 4 में आप satisfy नहीं हो रहे, तो इसको let us make it 100 crores. 40 crore is funded by the state and 60 crore is received in donation. Now 40 crore is a large amount of money or not? Yes. Will it come under the ambit of RTI? Yes. तो ये कोर्ट ने कहा है. But the court has created a lot of ambiguity by not defining the word how much is large, how much is substantial. कि भैया 1 करोड़ से ज्यादा सब्सटेंशियल है, 50 लाख से ज्यादा सब्सटेंशियल है, या 10 करोड़ से ज्यादा सब्सटेंशियल है. इट शुड हैव बीन ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड. तो कोर्ट इसको केस बाय केस बेसिस पे देखेगा कि वो सब्सटेंशियल है या नहीं. अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सब्सटेंशियल फंडिंग विल इंक्लूड इनडायरेक्ट फंडिंग आल्सो. Will include indirect funding also. What is indirect funding? Underline indirect funding. For example, land given at subsidized rate. Land given at subsidized rate by the state to NGOs. Subsidized rate पे land allot कर दी. For example, an NGO N1 wants to set up a healthcare hospital for poor sections in urban area. The cost of the land for setting up hospital is suppose 50 CR. Land जमीन urban area में है ना, जमीन की cost 50 CR है. But the land is allotted by the state to the NGO at a subsidized rate of 10 CR. That means 40 CR is funded by whom? State. तो सीधा पैसा ना देके आपको जमीन subsidized rate पे देती. That will also be counted under while doing calculations for substantial funding. So what is the rule? Only those NGOs which are substantially funded by the state will come under the ambit of RTI. Others will not come under the ambit of RTI. Shall we finish off NGOs now? So NGOs is over. Next click here. After NGOs, SHGs, self-help groups. So we are done with NGOs. इसमें मेन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की होती है पूछने की, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड एनजीओस. दो दे आर पार्टनर्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस. आज की डेट में व्हाई देयर इज मिसट्रस्ट बिटवीन स्टेट एंड एनजीओ. अब देखते हैं एसएचजीस को. व्हाट आर एसएचजीस? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. नाउ लिखो, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 15 to 20 वुमेन. एसोसिएशन ऑफ 15 to 20 वुमेन. SHG वैसे तो एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है, बट SHG has been found to be successful mainly in women. So it is a woman associated concept. SHG is a woman associated concept. So association of how many women? 15 to 20 women. Now why they come together? लिखो, they have common problems. घर में पिटाई हो रही है, गरीबी है ना, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस, और या फिर any issue, any common. There are many problems. Child nutrition की problem है, तो सारी women will have same problem and therefore they form a association. And how many women? 15 to 20 women come together. Now when they come together, they are meeting regularly and discussing their problems. Now, this association can be helped by a person known as facilitator. There will be a person known as facilitator who is ready to help this association. Now, what facilitator is trying to do? He will explain the concept of group dynamics to this group, to this association, to this SHG मान लेते हैं. Self-help groups, group dynamics explain करेगा. कौन explain करेगा? Now, one of the facilitator can be NGO also. NGO will contact whom? Or NGO will contact whom? SHG. Now what is SHG? Association of 15 to 20 women coming together. And why they are coming together? They have common problems to be solved. अभी कहते हैं कि a facilitator explain करेगा SHG members को that if the members pool their savings, they start pooling their savings, they can do some great things. They should pool their savings. So let us suppose the SHG started pooling their savings. Each member is contributing 10,000 rupees. How many members? 15. So total pool is how much? 1,50,000 rupees is the pooled amount. So group started as a group to solve their common
problems, but now is starting an economic activity in which they are pooling their savings. Now what they do, women come from same, इसमें point लिख लीजिए, women will come from same socio-economic background. Same socio-economic background means these women will have same problems. Economic means they will come from same status. एक ऐसा नहीं होगा one woman is very rich, one woman is very poor. No, the status of every woman will be same, and therefore they will contribute almost equal savings into the group. So total pool amount create हो गया 1,50,000 rupees, जिसको corpus fund भी कहते हैं, so called as corpus fund. This corpus fund now can be used in two ways. There are two ways to use the corpus fund. The first is giving micro loans to the members of SHGs, छोटा लोन किसी को भी चाहिए to meet their contingency requirements. किसी के घर में शादी आ गई, दहेज देना है, भैंस भाग गई, बीवी भाग गई, कोई भी कंटिजेंसी सिचुएशन आई, उसके लिए लोन ये मेंबर्स ले सकते हैं. कहां से? SHG से लोन ले सकते हैं. छोटा लोन चाहिए कोई भी, मतलब कहने का मतलब ये है, आई गिव एग्जांपल बिकॉज द लोन कैन बी टेकन फॉर एनी कंटिजेंसी रिक्वायरमेंट. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम इनफॉर्मल मनी लेंडर, you can take loan from SHG within the group, but the loan will be given only to the members of the group. Outside members cannot take loan. Second, the facilitator will say that second thing you can do is, दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप खुद अपनी माइक्रो एंटरप्राइज, you can start your own micro enterprise, है ना, माइक्रो एंटरप्राइज which will give you economic returns. जैसे अचार बना लिया, पापड़ बना लिया, तेल है, हाँ तेल निकाल लिया, जो भी काम, बेसिकली द वर्क इज मेनली रिलेटेड टू एग्रो प्रोसेसिंग. ये सबसे इजी है काम करना, क्योंकि रूरल एरियाज में द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज व्हाट? एग्रीकल्चर. तो रॉ मटेरियल इज रेडीली अवेलेबल, यू जस्ट नीड टू प्रोसेस द रॉ मटेरियल. अच्छा, माइक्रो लोन में दो चीजें लिखना. माइक्रो लोन फॉर कंटिजेंसी, प्लीज मेंशन दिस, कंटिजेंसी रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज टू स्टार्ट योर ओन माइक्रो एंटरप्राइज. किसी को अपनी दुकान खोलनी है, डेयरी खोलनी है, छोटी दुकान, किराने की दुकान, बीड़ी की दुकान, जो भी दुकान खोलना है, कोई भी माइक्रो एंटरप्राइज खुद का स्टार्ट करने के लिए, जब कोई भी माइक्रो एंटरप्राइज आदमी खुद का स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में there is no contractual obligation to serve only one client. I can serve multiple clients. मतलब वो gig economy, मैंने बताया ना, gig economy, did I have I discussed? Gig economy creates micro entrepreneurs. Micro entrepreneurs are self-employed individuals. Self-employed individual means freelancers. You know freelancers? They can work for any number of clients. But when I'm employed with somebody, I work only for that specific client. Now, तो ये समझ में आया? तो ये दो चीजें. So what is the benefit of SHG? They are creating self-employment opportunities. They are diverting people from informal money lenders, and they may also engage people in some kind of economic activity which is giving them good returns. ठीक है, तो ये SHGs करते हैं. नेक्स्ट लिखिए, SHGs are informal organizations. SHGs are informal organizations. They are not registered with the state. They are not registered by the state. Informal word underline करिए. तो मतलब कोई SHG को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है. They are informal. Next you write, at present there are 60 lakh SHGs in India. At present, there are 60 lakh SHGs in India, mobilizing around 6 crore women. 6 crore women. Next, history of SHGs. SHGs की क्या हिस्ट्री है और कब स्टार्ट हुआ? तो लिखिए 1972. अच्छा, who is giving hand holding to these women SHGs? Facilitator. And facilitator usually is what? NGO. तो वैसे एक NGO थी गुजरात में, लिखो NGO named सेवा, SEWA, सेवा in गुजरात. What is the full form of सेवा? Self-employed women association. सेवा. So this is an NGO working in which state? Gujarat. Now what सेवा did? लिखो, organize the unorganized women into groups. So as to enable them to mobilize funds, to mobilize credit facilities and get access to markets. Now underline the word, organize the unorganized women into what? Groups. अब देखिए इसमें क्या कर रही है सेवा, फैसिलिटेटर का काम कर रही है. तो इन्होंने क्या किया? वुमेन ग्रुप्स बनाए. वुमेन ग्रुप्स G1, G2, G3. Now G1 includes all those women who know the art of making papad, but they were doing the work of making papad individually at their home in an unorganized manner. So all women who make papad individually are now making papad in a group. ऐसे ये अचार वाली हो गई, ये टॉय वाली हो गई, कोई भी, मतलब कोई भी काम जो इंडिविजुअली वुमेन कर रही थी अपने घर पे, अब कैसे करेगी? ग्रुप. Now if they work in group, will they get better access to credit or not? Yes. And market also? Yes. How market? Can they negotiate for the price of the product? Yes. So that is what is called as collective strength, जिसको हमने क्या कहा? Social capital. So instead of doing work individually, you can come together and create social capital. तो ये काम शुरू किसने किया? सेवा in Gujarat. So this is the starting point. Then 1980.
another NGO, Myrada, in South India, in Karnataka likh lo, Myrada in South India, did exactly same as done by whom? Seva in Gujarat. Full stop, right? Myrada made SHG movement. Very successful in southern states. कौन कौन सी southern states? लिखो, आंध्र प्रदेश, AP, TN, कर्नाटका एंड केरला. ये 4 southern states में SHG movement is very successful, and as a matter of fact we can write in the bracket, SHG movement is more successful in southern states than northern states. SHG movement is very successful in southern states than northern states. How we can say that? 44% of SHGs, मतलब 60 lakh SHGs में से 44% SHGs are present in 4 states, in these 4 states. Now circle Andhra Pradesh and circle Kerala. Andhra Pradesh has largest number of SHGs. सबसे ज्यादा SHGs कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश. और केरला फिर सर्कल क्यों किया है? नहीं, सेकंड लार्जेस्ट नहीं. The best model of SHG is in Kerala. Known as Kudumshri project. Kudumshri project started in 1998. In which state? Kerala. तो यहाँ से I will start in the next class, क्योंकि conceptual है थोड़ा सा. So next class में I will continue with SHGs and try to finish off, and also half of cooperatives I will do in the next class. Give a small description about topics. ये बता तो दिया भाई. Please answer. Yes. Sources? No source. Only class notes. More than enough. Handout I give. Okay. Thank you all of you. See you in the next class.